Assalamu alaikum students, welcome back to physics class. Today we are going to cover the important long questions from 6 to 10 from unit 3 dynamics part 1. We will break down each answer step by step so you can understand the concepts deeply and remember them easily for your exam. Let's get started. Question number 6 is differentiate with examples between contact and non-contact forces. Also explain fundamental forces and the role of Dr. Abdus Salam from Pakistan in unifying two fundamental forces. Okay, first we have to differentiate between contact and non-contact forces. Then we have to explain the fundamental forces and how did Dr. Abdul Salam unify two fundamental forces. Contact versus non-contact forces. Contact forces require physical touch between objects to exert force. For the contact forces, as its name is indicating, there is physical touch required, mandatory between target uh, um, uh, target object and from which the object which is force putting the force. Okay, or non-contact forces act without direct physical contact between the objects. Here they don't need the physical contact, direct physical contact between both objects. Okay, contact force is transmitted through direct interaction. Of course जब physical touch होगा तो direct interaction से transmit होगी ये force. non contact forces transmit through a field जिसको हम कहते हैं एक certain चाहिए लोकेशन चाहिए, सर्टेन फील्ड चाहिए जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. Okay, examples of contact forces are friction between tires and rod, pushing a table, tension in rope. Friction between tire and rod, both are in contact. ठीक है, pushing a table, our hand and the table are in direct contact. Okay, examples of non-contact forces are Earth's gravity on moon, magnetic attraction between magnet and iron, and electric repulsion between charges. अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ ग्रेविटी एंड मून, अर्थ की ग्रेविटी की जो भी फोर्स लग रही है मून के ऊपर, देर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, बट इनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन. वो भी बेशक मैग्नेट को आयरन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में ना लेके जाए, तभी वो उनके बीच में फोर्स मौजूद होती है, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक रिपल्जन, टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, मीन्स वो एक जैसे दो चार्जेस, उनको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स से एक दूसरे से पुल रिपेल करते हैं, दूर एक दूसरे से दूर करते हैं. Fundamental forces in nature. All the forces in universe can be grouped into four fundamental forces: gravitational forces, electromagnetic forces, strong nuclear forces, and weak nuclear forces. Gravitational forces, attraction between all masses. For example, Earth's pull on us. ठीक है, तमाम masses के बीच में attractive force. ठीक है, electromagnetic force acts between charged particles. Electric force, magnetic force, charged particles के बीच में जो force होती है उसको कहते हैं electromagnetic force. Strong nuclear force holds proton and neutrons together in the nucleus. Strong nuclear force ही है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के सेंटर में होल्ड करके रखती है. वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर a certain type of radioactive decay. Dr. Abdul Salam's contribution. Dr. Abdul Salam, a Nobel Prize winning physicist from Pakistan, made history by helping unifying electromagnetic force and the weak nuclear force into one theory known as electroweak theory. This theory shows that at very high energies, these two forces are not separate but act as a single force. जब बहुत high energies provide की जाए. His groundbreaking research became an essential part of standard model of particle physics, which explain how fundamental particles interact with each other. Question number 7. Represent the following forces acting on represent the forces acting on a body using free body diagrams. ठीक है,
there are few example. First example is free bodies की डायग्राम्स के थ्रू हम बताएंगे कि ऑन पे फोर्सेस कैसे काम करती हैं. बॉक्स ऑन फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है. देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स एंड द टेबल. फर्स्ट इज वेट. यहाँ पे वेट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है या वेट भी कहा जाता है. Arrow pointing downward from the center of the box representing the force of gravity, जो अर्थ उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है. नॉर्मल फोर्स. Arrow pointing upward from the center of the force requesting the support force exerted by the surface. वो जो सरफेस है जिसके ऊपर वो बॉक्स रखा हुआ है, although अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर पर, ठीक है, बट उसके अपोजिट में जो सरफेस है, टेबल की सरफेस, वो उसके ऊपर अपोजिट अपवर्ड फोर्स लगा रही है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, उसको ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए ऊपर की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज हैंगिंग ऑब्जेक्ट. इस पे अगेन वेट एंड टेंशन. एक स्ट्रिंग के साथ हैंगिंग है तो उसमें टेंशन फोर्स आ जाएगी. वेट. Arrow pointing towards from the center of the object representing the force of gravity as usual. Tension. Arrow pointing upward along the rope string representing the pulling force exerted by the rope. अब यहाँ पर जो rope उसको hold करके against force of gravity या weight कर रही है carry, वो force कहलाती है tension force जो rope के अंदर होती है. Third example is object in motion on an inclined plane. मूव करता है ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर, उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होंगी. वेट, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स. वेट क्या है. एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट representing force of gravity. Normal force के arrow pointing perpendicular to the surface of incline representing the surface support. Normal force जो है वो represent कर रही है perpendicular to surface of the incline, represent कर रही है कि surface उसको support कर रही है, उसको towards gravitational force नहीं जाने दे रही. Frictional force. Arrows pointing to the incline and opposite to the motion representing resistance due to friction. और resist भी कर रही है मूवमेंट को, ठीक है. देन अप्लाइड फोर्स. एरो पॉइंटिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिप्रेजेंटिंग एन एक्सटर्नल पुश और पुल. जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन के पैरेलल जिस डायरेक्शन वो बॉक्स मूव कर रहा है, वो ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी अप्लाई की जा रही है ताकि ये उसी साइड पे मूव करे. क्वेश्चन नंबर 8 इज define momentum. What is its formula and unit? Is it a scalar or vector quantity? Show the units of momentum. Newton second and kilogram meter per second are equal. Momentum is measure of the motion of the body. किसी बॉडी की जो मोशन है, मूवमेंट है, उसको मेजर करना इज नोन एज मोमेंटम. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. It is basically the product of mass and velocity. जब हम मास को वेलोसिटी के साथ, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम हासिल होता है. P is momentum, M is mass of the body in kgs, and V is velocity of the body in meters per second. So system international unit is as formula is indicating mass kg, velocity meter per second. So the system international unit is kilogram meter per second, and it also expressed as Newton second. Type. Momentum is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Direction is the same as the velocity. Okay, we have to prove that 1 Newton second is equal to 1 kilogram meter per second. For Newton's second law of motion, force is equal to change in momentum divided by change in time. So change in momentum is equal to force applied multiplied change in time. Since 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square, we will put the value of 1 Newton here. 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square multiply जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो न्यूटन के साथ सेकेंड था वो सेकेंड, ठीक है. एंड एज वी कैन सी एस विल बी कैंसल्ड with division वाले एक s के साथ ऊपर वाला s कैंसिल हो जाएगा और just one s will remain in the division.
So the so it is proved that 1 ns is equal to 1 kilogram meter per second. Thus Newton second is equal to kilogram meter per second are equivalent units of momentum. Question number 9. Differentiate between mass and weight of the body. Mass is the total amount of matter present in the body, while weight is the gravitational force acting on the body. मास उस मैटर का उस बॉडी में मौजूद तमाम मैटर जो है उसकी टोटल अमाउंट को कहते हैं, जबकि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉडी पे काम करे, जो उसको टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रही है. फार्मूला ऑफ मास इज m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a, force divided by acceleration, while formula of weight is w is equal to mass multiply gravitational force, जिसको हम acceleration कहते हैं, gravitational acceleration, sorry. System international unit of mass is equal to kg and system international unit of weight is Newton. Quantity type, mass is a scalar quantity, it only need magnitude, while weight is the vector quantity, it require magnitude plus direction towards the center of the earth. Okay, change in location, remain the same everywhere. Mass remains the same everywhere, जबकि weight varies with gravitational field strength. Distance पे matter करता है कि weight कितना हो, from distance from the earth, center of earth. ठीक है, measured by बीम बैलेंस से हम मास मेजर कर सकते हैं और स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं. एग्जांपल ऑफ मास, अ सूटकेस हैज मास ऑफ 20 kg एनीवेयर and on earth its weight is 196 Newton, while on moon only 32 Newton. जैसे जैसे वो अर्थ की सेंटर से दूर गया है टुवर्ड्स मून, तो वो 196 के कंपैरिजन में उसका वेट कितना रह जाएगा? 32 न्यूटन. Question number 10 is what are gravitational field and gravitational field strength? Gravitational field क्या होती है and gravitational field strength क्या होती है? Explain. Gravitational field is the space around a mass where it exerts a gravitational pull on other masses. एक मास है वो अपने सराउंडिंग में मौजूद दूसरे मासेस को पुल कर रहा है, तो वहां पे एक फील्ड बन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. Any object with mass produces a gravitational field and the strength of this field decreases as the distance from the object is increases. अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो ऑफ कोर्स उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is defined as the gravitational force acting on a mass unit mass placed at the point in the field. Gravitational strength is equal to force divided by mass, where gravitational field strength is equal to F is g, and field F is equal to gravitational force, and m is mass of the object experiencing the force. Units Newton per kg, which is same as meter per second square. Examples: near Earth surface gravitational field strength is 9.8 Newton per kg approximately. This means every 1 kg mass experiences about 9.8 Newton of downward force due to Earth's gravity. Key point: the gravitational field tells us where gravity acts, while gravitational field strength tells us how strongly it acts at that point. So that's all for today. Thanks for watching. We have now completed long questions 6 to 10. So keep practicing these answers and revising the concepts regularly to strengthen your preparation. If you found this session helpful, remember to like, share and subscribe for more simple and clear physics explanations. See you in next class. Till then, Allah Hafiz.